ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये इंग्लिश लीगल डिक्टेशन है और ये जितने भी हाई कोर्ट्स हैं या कोर्ट हैं इंडिया के अंदर, सभी के लिए इम्पोर्टेंट डिक्टेशन है। तो इसको जैसे पहले अच्छे से लिखें। और जैसे मतलब ना कोर्ट में बच्चों एक बात ध्यान रखना भी, कोर्ट में एक्यूरेसी बड़ा ध्यान दिया जाता है। यानी कि जो शॉर्ट हैंड लिखी जाती है उसमें एक्यूरेसी का बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं अपने जैसे हरियाणा से हम हैं तो यहाँ पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट है। तो जैसे मतलब चंडीगढ़ हाई कोर्ट बोल देते हैं उसको जैसे। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसके अंदर क्या है भी, जैसे मतलब रिटर्न नहीं है, उसमें सीधा स्टेनो का टेस्ट होता है। जैसे 100 की स्पीड का है या जैसे 80 की स्पीड का है या 120 की स्पीड का है, तो उसमें जैसे 5 गलती माफ़ करेंगे। यानी कि जैसे 5 मिनट आपको डिक्टेशन बोली, 5 मिनट का ज़्यादातर जगह टेस्ट होता है। ये 10 मिनट का कई जगह, कुछ ही जगह होता है, लेकिन अब 5 मिनट इसको कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो जो पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट है, तो उसके अंदर पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी उसमें केवल 5 गलती माफ थी। और कंप्यूटर का एक टेस्ट था जिसमें स्किल टेस्ट था, प्रैक्टिकली था, 10 क्वेश्चन थे। उसमें से अगर आपके 6 ठीक हैं तो आप उसमें पास हो। उसके बाद स्टेनो का टेस्ट है। स्टेनो के टेस्ट के अंदर आपकी गलती 5 से कम है तो जैसे मतलब क्या कहते हैं, आप स्टेनो वाले टेस्ट में पास हो। तो इस तरह से जो है इतना जो है मतलब एक्यूरेसी मांगी जाती है। तो जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब का एक ही जैसे क्या कहते हैं नियम रूल्स रहते हैं। तो इसमें जो है एक्यूरेसी बड़ा जैसे महत्व दिया जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ खाली शॉर्ट हैंड लिखा मत करा करो, पढ़ा मत करा करो, उसको लिख करके पढ़ करके टाइप किया करो, अपनी एक्यूरेसी जाना करो। सॉफ्टवेयर के अंदर लीगल के मामले में सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी एक्यूरेसी सॉफ्टवेयर द्वारा 98-99% छपनी चाहिए। तो तब आपका सिलेक्शन जो है हाई कोर्ट्स वगैरह में हो सकता है 100%, 98%, 99%। मेरी बातों को ध्यान से समझा करो, जो मैं बताता हूँ उन बातों पे गौर किया करो, उस हिसाब से उस पर काम किया करो, तभी जो है आप इसमें सक्सेस पा सकते हो। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ लीगल डिक्टेशन नंबर, ये अपना जैसे 4 है। तो डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। The petitioner filed a suit for specific performance of an alleged agreement of sale dated 15/7/2003. The trial court dismissed the suit by judgment and decree dated 19/5/2008. The High Court dismissed the petitioner's appeal. Both the courts held that the petitioner had not approached the court with clean hands and that he had failed to prove any concluded contract for sale. High Court found that the defendants in the suit were also not above board in their conduct. It found that both sides were guilty of having lied on oath and deserved to be prosecuted. On the ground that courts were overburdened with litigation, the High Court decided that instead of directing prosecution, heavy costs should be levied on both petitioner and respondents to be paid to the state which spends money on providing the judicial infrastructure. It then proceeded to impose exemplary costs of rupees 1 lakh on the petitioner and rupees 1 lakh on the respondents and directed that the cost should be deposited with the Delhi High Court Legal Services Committee. Feeling aggrieved by the dismissal of his appeal, the petitioner is before this court. On merits, we find that the concurrent findings of the trial court and the High Court do not warrant interference, and therefore this is not a fit case for grant of leave. This learned counsel for the petitioner submitted
that levying cost of rupees 1 lakh against the petitioner was not warranted. He submitted that as the appeal before the High Court arose out of a civil suit, costs were governed by sections 35 and 35A of the Code of Civil Procedure and cannot exceed what is leviable under those provisions. Under section 35 of the code, award of costs is discretionary but subject to the conditions and limitations as may be prescribed and the provisions of any law for the time being in force. Under section 35, compensatory costs for vexatious claims and defenses may not exceed to rupees 3000. Further, the primary object of levying costs under section 35 and 35A of the code is to the recompense a litigant for the expense incurred by him in litigation to vindicate or defend his right. It is therefore payable by a losing litigant to his successful opponent. When an appellant or a plaintiff has already paid the prescribed court fee in regard to the appeal or suit to the state at the time of institution, it is debatable whether any costs can be awarded to the state by way of penalty in a litigation between two private parties. One view has been that the provisions of sections 35 and 35A of the code do not in any way affect the wide discretion vested in by High Court in exercise of its inherent power to award costs in the interests of justice in appropriate civil cases. The more sound view, however, is that though award of costs within the discretion of the court, it is subject to such conditions and limitations as may be prescribed and subject to the provisions of any law for the time being in force. 42 सेकंड का जैसे मेरे को एक बार वो बताना 44 सेकंड 42 का बताओ 42 का जी तो ये जो स्पीड थी ये थी 108 की। इसको क्या कहते हैं वेबसाइट पे लगा दिया गया है, पहले इसको अच्छे से पढ़ें और फिर जो है इसको जाकर के वहाँ पर टाइप कर दें। इस क्लास के अंदर इतना है बच्चों। नमस्कार बच्चों।